गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। प्रणाम, वणक्कम और सत श्री अकाल। एक हफ्ते से हम ये पावर मैट्रिक्स के बारे में जो नया उभरता आ रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इस पावर मैट्रिक्स में हमने देखा कि एक ये जो पावर क्वाड्रिलैटरल बन रहा है उसमें यूएसए और इंडिया के बीच में आकर्षण है और चाइना और रशिया के बीच में आकर्षण है। बाकी इंटर रिलेशनशिप जो है वो कुछ तनाव है और कुछ आकर्षण है। और इसी का विश्लेषण हमने 5 एपिसोड्स में विश्लेषण किया। और ये जो विश्लेषण बहुत बारीकी से हमने देखा, पहले की आउटलाइंस ऑफ द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स, उसके बाद हमने देखा इंडिया चाइना इन द पावर मैट्रिक्स, इंडिया रशिया इन द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स और इंडिया यूएसए इन द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स। आखिर में हमने एक ओवरऑल व्यूइंग एनालिसिस किया ग्लोबल पावर मैट्रिक्स के बारे में। ये जो ओवरव्यूइंग एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स हमने जो किया है, इसमें हमने 3 मुद्दे उठाए और ये तीनों मुद्दों को अलग अलग हमने डिस्कस किया। पर ये तीनों मुद्दे बहुत लंबे हो गए और तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गए। इसीलिए हमने ये 3 मुद्दों को अलग 3 वीडियो इसके तरफ में जारी कर रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये तीसरे मुद्दे का है। क्या है ये मुद्दा, आगे देखिए। तो तीसरा मुद्दा है और ये फाइनल मुद्दा है आज के लिए। ये है कि ये अच्छी बात है कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, पर हमारे प्रॉब्लम्स कुछ हैं और हमारे प्रॉब्लम्स जब तक हम ओवरकम नहीं करेंगे तो हम एक बैलेंसिंग पावर ऑफ स्टेबल बैलेंसिंग पावर उभर के नहीं आएंगे। मैं अपना डीजीएमओ साहब या जनरल भाटिया साहब से दरखास्त करूंगा कि आप क्या सोचते हो कि जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो इंडिया मस्ट फोकस ऑन so that power which has arrived and not a power with the potential always. Over to you, sir. Thank you. This is a very बहुत वास्ट सा क्वेश्चन है ये। नहीं, आप ये आपकी बात मैं मानता हूँ, ये बड़ा वास्ट का क्वेश्चन है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर आप फोकस भी करेंगे और बाकी दो व्यूज देंगे, that I think will do the trick, sir. इंटरनल इश्यू में साथ एक मेजर हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें हाउ अपना जो डेमोग्राफी डिविडेंड है उसको कैसे हैंडल करेंगे, मेन हमारी जो इश्यू है ये रहेगी। इफ वी कैन गिव अ फोकस जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को जो हमारे तो नियरली 750 मिलियन पीपल हैं इन द वर्किंग एज ग्रुप, अगर हम उसको कैसे हार्नेस करेंगे, बिकॉज दैट विल लीड अस टू better economy will lead us better security and also well-being of our people, which is very important. Okay, we are taking people out of poverty to the next level. In the end, हमारा aim क्या है? India should be a modern, prosperous and secure nation. ठीक है, और अगर हम सिक्योर नहीं होंगे, पीस और स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी। सो इट्स अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात है। For security you need economic development and for economic development you need security. तो मेजर जो इश्यू जो मैं देख रहा हूँ अभी वो ये देख रहा हूँ कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे ऑप्टिमाइज करें। उसके लिए हमको एजुकेशन चाहिए, उसके लिए हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और हमको यूथ के लिए डायरेक्शन चाहिए। दैट इज वन इश्यू इन द सिक्योरिटी डोमेन, बिकॉज सिक्योरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिंक्ड है। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, हमें कोई शक नहीं होना चाहिए उसमें। जम्मू एंड कश्मीर आज हमारे वायलेंस लेवल से सब क्रिटिकल है, लेकिन नेटवर्क अभी भी है वहां पर मौजूद है। सो दैट नेटवर्क्स कैन बी रिवाइव्ड एंड इट इज अ एक्सटर्नली सपोर्टेड प्रॉक्सी वॉर बाय पाकिस्तान। और फॉर्चुनेटली बिकॉज द सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसके जो प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स की बालाकोट के बाद उनके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ से कोई हाई प्रोफाइल अटैक हमने आफ्टर 2019 नहीं देखा। 2016 2019 में फरवरी में हुआ पुलवामा, उसके बाद हमने हाई प्रोफाइल अटैक नहीं देखा है। तो देयर इज अ कैप आउट देयर, बट लाइक मैं ये नहीं कहता दोबारा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उसको ठीक रखना पड़ेगा, व्हिच इज अ 3P स्ट्रेटजी: प्रोएक्टिव, यूनिटिव एंड प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल डायनामिक्स है जो उसको पाकिस्तान को हमको
एक टैप करना पड़ेगा, राइट? दूसरे इंटरनल डायनेमिक वाले हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखा जाए, मेरे हिसाब से जैसे लॉ एंड ऑर्डर, उसमें इंसिडेंट बची नहीं है, लेकिन चाइना हैज द कैपेसिटीज एंड द कैपेबिलिटीज टू rekindle द प्रॉब्लम्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये बड़ा मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है, और खास तौर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये सिक्योरिटी चैलेंज है। उसके अलावा जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, हम जो मर्जी बोल लें, ग्रोथ रेट वगैरह सब ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्टिल येट टू अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब तक हमारी इकोनॉमी होगी, हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी, और मेरे ख्याल से हम अपने सिक्योरिटी पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं मिलिट्री पे खास तौर से, वो एडिक्वेट नहीं है। गिवन आर थ्रेट्स जो हमको मिटिगेट करनी है, जो हमको मीट करनी है, वो एडिक्वेट नहीं है। वी हैव टू परचेज, आई यूज द वर्ड परचेज, मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ीगिरी की बात कर रहा हूँ मैं। वी हैव टू परचेज पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस। आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट मेंट टू फाइट वॉर, सॉरी, आर्म्ड फोर्सेस आर मेंट टू प्रिवेंट वॉर्स, armed forces meant to deter wars, nations fight wars as a last resort, ठीक है? हमको सिक्योरिटी चाहिए, एंड वी हैव टू परचेज पीस थ्रू प्रिपेयर्डनेस, एंड लेस देन 2% अगर जीडीपी हम देंगे, हमारे पास गैप्स है, उसमें हमको फिल करने पड़ेंगे। हमको आत्मनिर्भरता को और जोर देना पड़ेगा, मेक इन इंडिया को जोर देना पड़ेगा। अभी जनरल आहूजा बता रहे थे, उन्होंने बहुत काम किया था। 2013 जुलाई को हमने एक सैंक्शन लिया था सीसीएस से फॉर एक्रिशन फोर्सेस, ठीक है, जिसको हम लूजली माउंटेन स्ट्राइक कोर बोलते हैं। 90,000 एडिशनल मैन पावर थी उसमें फॉर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। 2013 की बात कर रहा हूं मैं। 8 साल में हमको 67,000 करोड़ में ये चाहिए था, 8 साल के ऊपर 8,000 करोड़ प्लस माइनस हर साल। और वो करते तो 2020 तक, 2021 तक हमारे पूरे कैपेबिलिटीज बन जाते थे। हमने, बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं थी अफोर्ड कर पाते, वी गॉट द सैंक्शंस, बट फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं हुई है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने बहुत काम किया था उसमें, ठीक है, आपका मेन टास्क ही यही था मेरे ख्याल से। तो अगर हम अपने मिलिट्री पे, अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, ऑपरेशन रेडी में पैसा नहीं खर्च करेंगे, उसको नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से वी विल आस्क फॉर ट्रबल। तो ये 3-4 चीजें हैं मेन। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी नीड इकोनॉमिक और सिक्योरिटी। अभी आप इजराइल को देख लीजिए, उनका बजट देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, उनका बजट देखिए, चाइना का बजट देखिए, यूएसए का बजट देख लीजिए, जापान का बजट देख लीजिए, ठीक है? और हमारी थ्रेट्स तो मल्टीपल नहीं है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। तो इसको करने के लिए हमको इकोनॉमिक के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि एट द नेशनल लेवल कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं, और हमको अपनी पॉपुलेशन की वेलबींग देखनी है, हमको उनको गरीबी से बाहर निकालना है, हमको चाहिए हम। लेकिन उसके साथ साथ जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं होगी। तो ये बड़ा सा एक सारा ये जो गेम है, ये हमको देखना पड़ेगा। ये मेजर चैलेंजेस जो हमारे यहीं पर हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट होता है। राइट सर, बहुत थैंक यू सर फॉर योर व्यूज। आई गो विद यू 100%। और मेरा भी मानना यह है कि हमारा अर्थव्यवस्था, जैसे मेरा पूरा विश्वास है, वो बढ़ेगा। दैट्स हिस्ट्री एंड दैट्स द वे आवर नेशन इज बिल्ट, राइट? आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। द पॉइंट जो आपने बोला, विच इज आई थिंक द क्रक्स ऑफ द इशू, दैट द टाइम हैज कम। अगर हम एक बैलेंसिंग पावर बनना चाहते हैं, वी हैव टू गो पास और पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ पोटेंशियल, we have to invest more in our security, both internal and external. तभी हम जाके कुछ कैपेसिटीज बढ़ा सकते हैं, which make us apart. So your views, General Ahuja sir, on this whole story of internal weaknesses, which you think are key, because just touch upon the key ones. General Bhatia has covered them very comprehensively. Let me just highlight 3-4 points. Number one, we have to focus on internal issues with external dimensions. That has to be our priority. And we have to be very mindful of maintaining internal security in our border states
and in our states which are geographically farther away from the capital, from the center of power. Uh, Irrespective of the shade of the government that may be there in any particular state. I mean, this is a national imperative. Next is we have to be cognizant of the power play that is going on in our immediate neighborhood. जहां पे जहां पे मेजर पावर गेम प्ले की जा रही है, पर्टिकुलरली वहां पर उसके जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनमें हमें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. अगर हम देखते हैं कि वो हमारे नॉर्थ में कहीं नेपाल में कोई प्ले हो रहा है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा. आजकल अगर आप रीसेंट राइटिंग्स पढ़ें, कुछ जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो ज्यादा एनालिसिस हो रहा है, उसमें लोग जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं म्यांमार के अंदर, उनको जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडो चाइना का मतलब वियतनाम, कंबोडिया, लाओस रीजन में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जब हम 70s के अंदर बात किया करते थे कि फियर ऑफ द डोमिनो इफेक्ट दैट टाइम. I mean, people are linking those developments there to Myanmar today. और कल I mean, नॉर्थ ईस्ट में आएगा. right, wrong, whatever is happening, but this is the perception that is there, and these have implications on our states, on our territories. So let's be mindful that our external security and our internal security, they are very intricately linked to each other, and we should do that in order of priority. Many times, a thought, while we were discussing, a thought comes to my mind that we have to have in our minds something like the Richter scale of internal security or internal or disturbances, insurgencies, or whatever we like to call them. We need to have a weighted matrix. And like I said, anything with secessionist tendencies, anything with external dimension should be the nation's first and foremost priority. That's all. Thank you, sir. So your views, sir. Brigadier Sehgal, sir. Okay, I'll be very quick. 2-3 things. Fundamentally, India is on economic resurgence. We have what I call legacy threats that we continue to face. We have put in place a fairly elaborate Atmanirbhar program, which is slow, but it is taking shape. So what is required? What is required is for India is consolidation of political power, consolidation of economic power, and consolidation of security power. And that requires that we have to ensure, like both my other colleagues have said, that we have to ensure that our regional neighborhood and our neighborhood policy is such that we maintain a degree of balance, degree of cooperation, and degree of ensuring that they do not upset. The domino effect should not affect India because of any of these reasons. Therefore, dissuasive deterrence, integrated deterrence, whatever you want to call, whichever word you want to pick up from the United States, but I would say a dissuasive deterrence on our continental way, a strong, credible capacity built up on our maritime domain, but which cannot be done initially. So we need to have a relationships with the United States and other equal partners who provide well with the maritime domain initiative and maritime domain awareness and security, and use the next 10 years period of consolidating Indian power. Politically, we have to create a degree of political consolidation and coherence in which
political parties do not fight among themselves, and they all work cohesively towards the idea of India. And that's where we need to work on. We have a huge amount of vociferous and tendency, with divisive tendency amongst ourselves. We need to overcome them. We have, after a huge amount of hard work, huge amount of capability, look at the way we handled COVID. I think it's exemplary the way we handled COVID, and it was all, and we built up capacities. We did it because we were all involved in doing that, and they were without partisanship. Now that's the kind of relationship we need to have. India is on the march. India is on the go ahead. India needs to consolidate capacities, capabilities, and India has to have a credible dissuasive deterrence, whichever way you want to do it, and that is important for India. So internally, yes, we have challenges, but we also have strong opportunities, and this is the time and the period that we need to capitalize them. That's all I. Can you give me a minute? Please, sir. Please, sir. Go ahead. Thank you. I think I'll take off from what you said. Security की definition बदली है. When you talk about security, it is comprehensive national security. क्या हमारे structures और systems उसको further करते हैं? मेरे ख्याल से this is a time to rethink. I'm just giving a broad idea. Is it a time to have a Ministry of Security? अभी देखें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपना चलता है बॉर्डर मैनेजमेंट में. अब नदर्न बॉर्डर देख लीजिए, एलएसी देख लीजिए, आईटीबीपी बॉर्डर मैनेजमेंट करता है, आर्मी वहां पर है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ऑपरेशन है, लेकिन सिस्टम नहीं है. वो फंक्शनल लेवल पर है. वो जनरल आहूजा 4 कोर में थे, मैं 33 कोर में था, तो हमने चलो भाईबंदी करते थे, लेकिन इंटरमीडिएट हेडक्वार्टर्स से कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स आते हैं, हायर कॉन्ट्रडिक्टरी ऑर्डर्स आते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो अपने धुन में घूमता है, ठीक है. एमईए और एमओडी में है, तालमेल है, बट इज दिस अ टाइम टू हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी which is all encompassing, looking after comprehensive national security, which is all encompassing, and that has all elements of national power in it. MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आईएस डिवीजन है, बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन है. मैंने कहा सब पे सब दे दो, बट आईएस और बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी में आना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो है ही है. एमईए की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, बिकॉज़ एमईए इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, फॉर टुमारो इज अबाउट इंफॉर्मेशन. Are we catering to the अपना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? That has to come in. अब हम टेक्निकल विजन देख लीजिए 2030 वाला, वो कितना कहता है डिफेंस. I think so. All this combined, it's a thought which I wanted to propagate on your platform for further discussion, to have a structure and system which is future looking. कल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. Technological. Right, yes, I completely agree with you. Totally agree, sir. Sir, yours, sir? Anything you want to say, sir? Right. I said Right, I so generally the agree. point- Yeah. Now the issue which comes out of this discussion on the internal factors which we have to stress on, कि हमारा सोच विचार बदले करने की जरूरत है. चाहे वो पॉलिटिकल सोच विचार हो, क्या चाहे वो हमारा अर्थव्यवस्था का हो, चाहे हमारा how do we deal with our own people. And the important point which General Ahuja said, those people who live far away from Delhi, at all four corners you have different viewpoints. How do you get them together, right? In fact, I'm sitting in a state which has a completely different viewpoints on many issues which are burning in Delhi. So there is change which is happening. As we change and as we try to become a power, हमें अपना इंटरनल सोच भी बदली करने की जरूरत है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स बदली करने की जरूरत है. तो इस मामले में I would like to see, I mean, I would really like to examine the Chinese model, because उन्होंने काफी हद तक ये किया है, ये इंटरनल चेंज. और जो जनरल भाटिया बोल रहे हैं about the Ministry of Security, etc., they have this magic figure called the United Works Department, right, which breaks all these barriers and stitches this together
एंड जैसे बिल्कुल। उन्होंने सही बताया कि जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, which doesn't build our own narratives, right? It only conveys others' narratives to us. So there are a lot of internal reform which is required. Having said this, sir, I think we have raised the issues which are required for this third question, and I'll leave it at that.